हमें मालिक जिसका प्लाट नहीं है. Assalamu alaikum, student. Today we are talking about the latent heat. As I discussed in our previous lecture, heat capacity and specific heat capacity. Now we move towards the one step ahead. What is latent heat of fuel and latent heat of vaporization? When the heat amount is required, the heat absorbed or released for the change the phase of any matter, this is called the latent heat. Simply, you can learn the latent heat when the amount of heat is required to change the phase of any matter. When whether it is converted from solid to liquid, liquid to vaporization, vaporization to the solid, and liquid to the again ice. It's the change of different phases of a matter which attain during the different process. But during that process the temperature remains constant, because during that process the entered heat is not using to raise the temperature of the substance, but this heat is using to breaking the attractive intermolecular forces. By definitions, latent heat of fusion is the energy which must be supplied to cause a substance to melt at constant pressure. In that, you can enter the heat, you are using that the amount of heat to breaking the intermolecular attractive forces present in the solid structure, because we know that in the solid material the molecules have very attractive and very close to each other at the rigid structure. But so during that process the temperature remains constant, and the given heat is used to break the intermolecular forces. Similarly, latent heat of vaporization is energy which must be supplied to cause a substance to boil at a constant temperature. Similarly, when the some matter which attain the liquid form and convert into the vaporization, here we are consider the example of water, which at different states, and then the water is converted from liquid to the from liquid from liquid to the steam form. The given energy is used to evaporate or convert the water into the steam form, and have the molecules having greater kinetic energy are boiled away or moved away from the water into the steam form, and the remaining molecules have average or low kinetic energy. Change of state. Every The substance has different state: solid, liquid, gas. If you are consider the example of water, so then the solid form of water is called ice, and when it began to melt, it will be converted into the water form. And again, when it become to the convert to the the vaporization form, it will be turned into the steam form. This process is called vaporization. When the ice began to the melt, it process is called the melting point. And if we are talking about the reverse process, when water again turn into the solid form, this process is solidification. You must keep your mind the melting and solid freezing point are the same. Okay, when the water is converted from liquid form into the steam form, this is called the boiling point. The reverse process of this, when steam again convert into the liquid, this process is called the condensation. And must keep in your mind, when the steam convert into the direct into the ice form without converted into the liquid form, this called process is called the sublimation. What is heat of fusion? To melt a solid means to change its form. Heat of fusion means when the amount of heat is required to break the intermolecular forces to change the phase of matter from one state to the another state, from solid state to the liquid state. The heat is required which is absorbed into the substance, and this heat is used to breaking the rigid structure of the solid. Yeah, in simple words we can understand by this, to break the attractive intermolecular forces present in the substance. When the reverse process, when we are talking about the reverse process, so then amount of heat not be absorbed, it can be released or removed from again convert the liquid form to the solid form via rigid structure. Heat of fusion, when the phase change is from solid to liquid, or the you can heat of fusion by the two methods: when the phase change from solid to liquid or liquid to solid. These two processes are the vice versa. So then when liquid to solid, the heat must be released. When solid to liquid, the heat be absorbed. So then del Q is the amount of heat at different temperatures, difference
amount of heat absorption या amount of heat release at different temperatures. M is the mass of structure, HF or LF is the latent heat. It's your own choice. In your book, latent heat is donated by HF, and but here I donate by the LF. It is your own choice. The latent heat of water is 3.34 joule per gram, but in your book it is 3.36 joule per kg. There is no big difference. Note down the question before. Experiment number 8.1. How much heat is required to melt 1 kg ice, or what is latent heat of ice? The question is asked by two ways. The answer is ice changes at a 0 degree into the water. Latent heat of ion of ice is 3.36 into 10 to the 5 joule per kg. Note of this question on your physics notebook before the experiment number 8.1. Above 3 lines का आंसर ये है. Heat of vaporization. We are discussing heat of fuel when a matter change from solid to liquid or liquid to solid. Now we are talking about the a matter change its state from liquid to vaporization. Okay, so then amount of heat is required to change the matter state from liquid state to the vapor or gaseous state. This process requires energy because molecule must be freed from the liquid state, because in the solid structure molecules are very closer and stuck each other. Liquid में आपके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ स्टक नहीं, कम स्टक होते हैं एज कम्पेयर टू द सॉलिड. बट जब आप गैस की बात करते हैं तो फ्री मॉलिक्यूल्स आपके गैसेस स्टेट में एज कम्पेयर टू द लिक्विड वो और ज्यादा फ्री होते हैं. तो उनको मोर फ्री करने के लिए हमें और हीट रिक्वायर्ड होती है कि जो लिक्विड के मुकाबले में, जो सॉलिड के मुकाबले में लिक्विड में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कम है, उनको और रिलीज किया जाए. So, condensing a gas to liquid is the reverse vaporization. It requires that energy be removed from gas so that the molecules can cluster together instead of flying away from each other. The heat of transformation for these phases change is called the heat of vaporization. You can denote by this. The latent heat of vaporization is 2256 joule per gram and Kelvin per kg. Phase change. This is the simplest way. By this figure you can simply understand this. um, uh, Understand the phase changes of water. When the water in the ice form, it will be the condensing, it will be the convert into the, from melting point it will convert into the liquid form. Okay, when you are boiling the water it will convert into the vaporization or gaseous form. Okay, when again it will convert into the gas, and again it convert liquid. डायरेक्ट स्ट्रीम से अगर वो आपका पास सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो दिस प्रोसेस को आप लोग क्या कहते हो, आप लोग इसको सब्लिमेंटेशन कहते हैं, विदाउट कन्वर्जिंग इट टू द लिक्विड फॉर्म. ठीक है, जब वो स्टीम से डायरेक्ट आता है और जब आपका लिक्विड आपका दोबारा से उसमें जो आपका स्टीम से वो दोबारा आपके लिक्विड में कन्वर्ट होता है वो आपका कंडेंसिंग पॉइंट कहलाता है. ठीक है, फ्रीजिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट जो होते हैं वो आपको मैंने बताया सेम होते हैं. दिस इज द ग्राफ दिस शोज द phase changes. This is the graph which shows the phase changes of water. ठीक है, graphically we can elaborate or explain the phase changes of water. When the water is in the ice form, this temperature is below the 0 degree. ठीक, when ice start to began to convert into the liquid form, the given heat is used to breaking the intermolecular forces and the temperature remains constant. So at point B and C, the temperature is not increasing. If someone is asking why the temperature is remain constant when ice began turn into the liquid form, so you can answer it because the given heat amount of heat is used to break the intermolecular forces which are present between the which are present in the ice form. But when the water is completely when the ice is completely melt and turn into the water form, then temperature rise up to the 100 degrees centigrade, and again at point D to E the temperature remain constant because water from liquid form, because water turn from liquid form into the vaporization and turn into the steam form. The amount of heat is using not to raise the temperature, but also this amount of heat is using to convert the water molecules into the steam form. When maximum temperature जो आपकी steam का होता है वो 375 डिग्री सेंटीग्रेड होता है. When you convert the all water molecules into the steam, then temperature water vapor में convert हो जाएंगे तो आपका temperature जो होगा वो raise हो जाएगा. Heat curve illustrated. This is another graph which is
shows the different state of water, because we are considered the example of water. Solid में आप देख लेंगे मॉलिक्यूल्स का जो स्ट्रक्चर है वो आपस में एक दूसरे के साथ स्टक हुए में, इनके दरमियान जो गैप है वो बहुत कम है, और एक दूसरे के साथ अट्रैक्टिव फोर्स है जो एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा क्लोजली ये कनेक्टेड है। मेल्टिंग में इनका थोड़ा सा जो गैप है वो बढ़ जाता है, एक दूसरे के साथ फ्री हो जाते हैं, इनकी थोड़ी सी फ्री मूवमेंट हो जाती है। तो ये आपका जब लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है और आपका टेम्परेचर भी यहाँ से बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, जब आप उसको बॉयल करना शुरू करते हो, वाटर 100 डिग्री पे आपके पास बॉइलिंग पॉइंट होता है, जहाँ पे हमारा पानी जो है बॉइल्ड होना शुरू हो जाता है। और इस टेम्परेचर पे हमारा जो टेम्परेचर है इस पॉइंट पे हमारा कांस्टेंट रहता है, चूंकि तमाम जो हीट होती है वो आपके मॉलिक्यूल्स को वेपर में कंप्लीट कन्वर्ट करना शुरू करती है। जब वो वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं आपकी स्टीम, और आपकी स्टीम बहुत ज्यादा बन जाता है वाटर मॉलिक्यूल्स। एक होता है शुरू में बॉयल होना, जब आपका बॉयल हो के जब बहुत ज्यादा स्टीम इकट्ठी हो जाती है तो वहां पे आपका टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। phase change diagram, this is another diagram which you can show the phase diagram of water, कि आपकी जो थी, जब आपकी आइस जो थी वो जब आपके पास आइस सॉलिड फॉर्म में थी तो उसका टेम्परेचर 0 डिग्री रहेगा। फिर जब उसका मेल्टिंग पॉइंट होगा तो उसके पास जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज एट दैट पॉइंट इज डोमिनेट है, मतलब प्रोमिनेंट है, आपके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ स्ट्रक हैं। ठीक है, व्हेन द आइस कन्वर्ट इनटू द वाटर फॉर्म, तो देन आपके पास यहाँ पे टेम्परेचर राइज हुआ और यहाँ पे आपके पास 100 डिग्री तक उसने अटेन कर दिया, और इस एट दैट पॉइंट पे इंटरमोलिकुलर फोर्सेज जो थी वो वीकेंड हो गई, एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा वीक हो गई। ठीक है, आपके वीकेंड होने से मुराद है मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ फ्री होना शुरू हो गए, कि जिन फोर्सेस ने उनको आपस में एक रिजिड स्ट्रक्चर सॉलिड के फॉर्म में किया हुआ था, लिक्विड में थोड़ा सा ब्रेकेज हुआ, और जब आपने उसको पानी बॉइलिंग फॉर्म में आया तो वो ब्रेकेज बिल्कुल ही ब्रेक मतलब टूट गया, कि अब उनके दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो बहुत ज्यादा कम हो चुकी है। और यहाँ पे भी ये टेम्परेचर जो है वो आपका कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि वही जो हीट है वो आपकी किस में कन्वर्ट हो रही है, वो आपके मॉलिक्यूल्स को, वाटर मॉलिक्यूल्स को स्टीम में कन्वर्ट कर रही है, उनकी ब्रेकेज को कंप्लीटली तौर पे जो टूट चुकी है वो उसको वेपर में कन्वर्ट कर रही है। ठीक है, एट दैट पॉइंट जब आपने यहाँ पे हीट एड अप हुई है तो आपके पास क्या हुआ है, आपके पास स्टीम बहुत ज्यादा मिकदार में बन चुकी है, और जब वो स्टीम बन के उठती है तो वहां पे आपके पास कोई मॉलिकुलर फोर्सेस नहीं होती कि जो मॉलिक्यूल्स को आपस में दोबारा से ज्वाइन करेंगे कि एक स्ट्रक्चर। फिर हाँ, इसका एक रिवर्स प्रोसेस है जो मैंने आपको बताया, कंडेंसेशन एंड सप्लीमेंटेशन। वो अगेन फिर उसी प्रोसेस पे, जब आप लोग टेम्परेचर, ये था आप लोग टेम्परेचर बढ़ा रहे थे साथ साथ, उसमें हम लोग को टेम्परेचर को बिलो करेंगे। व्हेन यू आर बिलोइंग द टेम्परेचर या ड्रॉप द टेम्परेचर, तो देन अगेन यही प्रोसेस रिवर्स डायरेक्शन पे आएगा, कि आपकी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की जो वीक हो गई थी वो स्ट्रॉन्ग होती जाएंगी, और आपका जो एक आपने वेपोरेट किया था उसको आप लिक्विड में कन्वर्ट करोगे, और अगेन उसको सॉलिड फॉर्म में करोगे। ठीक है, ये आप डायरेक्ट जो है उसको सॉलिड में चेंज कर लेंगे। अच्छा, नोट डाउन दिस क्वेश्चन, व्हाट इज द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर। तो यू कैन नोट दैट कि लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन जो है वो आपके पास क्या होती है, 1 kg। यहाँ पे ये 1 kg स्टीम, 1 kg वाटर, 1 kg आइस। ठीक है, अब इसको आपने देखना है कि लेटेंट, ये आपके पास जस्ट समरी है, दिस हेयर इज द समरी ऑफ आवर लेक्चर, कि चेंज ऑफ स्टेट अगर आप लोग कंडेंसेशन का प्रोसेस करते हो तो ये वेपोराइजेशन हो रहा है, सॉलिडिफिकेशन हो है आपका, उसके बाद आपने उसको वाटर में कन्वर्ट किया, फिर आपने उसको इवेपोरेट कर लिया। ठीक है, अगर आपका कंडेंसेशन का है, फिर आपका सप्लीमेंटेशन का प्रोसेस है। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर की 26 किलो जूल है आपकी बुक में। यहाँ पे अगर इफ यू आर यूजिंग द साइंटिफिक नोटेशन मेथड, तो देन you move into the 3 points to the left side, so then you can enter the 3 digits as the power of 10, तो it will become 2.26 into 10 is to power 3, और अगर किलो को रिमूव करेंगे तो वो 6 बन जाएगा। सिमिलरली सेम प्रोसेस इधर की 3.34 इंटू 10 is to power क्या बन जाएगा, 6 किलो जाओ मतलब बन जाएगा। ठीक है, ये आपको उन्होंने बता दिया एनर्जी इन किलो जाउल, ये उन्होंने आपको बता दी एनर्जी आउट, एनर्जी इन। इट मीन्स कि आपके पास इतनी एनर्जी आपको रिलीज करनी पड़ेगी, इतनी एनर्जी आपको लेनी पड़ेगी, ये जिस प्रोसेस में हम लोग जाएंगे, क्योंकि जब हम लोग लिक्विड से हम लोग वाटर सॉलिड से लिक्विड में जा रहे हैं तो देन हम लोग एनर्जी अब्सॉर्ब कर रहे हैं, जब हम लिक्विड से सॉलिड में आ रहे हैं तो एनर्जी हम रिलीज कर रहे हैं। ठीक है, okay students, I hope you will understand the lecture. If you have any confusion then you can ask me.